Hello, friends. Namaskar, and a very good morning to all of you. So today we'll discuss about one of the major characteristics of a good test. As we know that if we have a test that must fulfill at least four characteristics. One is reliability, one is validity, one is objectivity, and usability. At least four characteristics: reliability, validity, objectivity, and usability. And in the previous video, I have already discussed about reliability and what are the methods of estimating reliability coefficient. So if you have any query, I'll give the link in the description box. You can visit and find out. And if you have any query questions or you want some means to give some rectification feedback, then you will also put your comment there. So today we'll discuss about yet another characteristics of a good test, and that is validity. So validity is nothing but ऐसा है कि आप किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं कुछ इंटेंशन रख के। अगर वो इंटेंशन आपका वो चीज फुलफिल किया तो आप उसको वैलिड बोलेंगे। समझ में नहीं आया ना? मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैं और एक चीज बोलता हूँ कि आप एक टेस्ट प्रिपेयर किए, टेस्ट भूल जाइए, आप एक पेन प्रिपेयर किए हैं, आप एक पेन को तैयार किए हैं और आपका इंटेंशन है कि वो पेन 10 दिन तक चलेगा या फिर 10 पेज तक लिख सकते हैं आप उसी पेन से। अगर वो पेन 10 पेज लिखने में सक्षम रहा तो आपका जो पेन है वो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। वेरी सिंपल। Once again, I'm giving yet another example which is very much related and you must have experienced it. Say for instance, you ask your friend, one of your very favorite friend, you ask him, how old are you? He told, I'm 20 years old. Very good. So after 15 days, you ask the same friend, how old are you? He told, yes, I'm 20 years old, I told you. And after 15 days, also you ask the same question to your friend, though he may irritate, but still he said, I am 20 years old. So in the first side he told 20, second side he told 20, third side he told 20. So you can say your friend is reliable because consistently your friend is telling I am 20 years old. But the twist is your friend is telling lies. He is actually 22 years old. He's telling 20 every time. So your friend is reliable, but as your intention was that you have to measure the age of your friend, that intention is not fulfilled. That's why your friend is reliable, no doubt, but your friend is not valid. So very here example, we may conclude that all reliable tests are not valid, whereas all valid tests may be reliable. So, in this way, we'll move towards the different types of validity. क्या क्या वैलिडिटी हम मतलब जब हम स्टैटिस्टिक्स में या फिर टेस्ट में कंसिडर करते हैं, क्या क्या वैलिडिटी हमारे सामने आता है। तो एक ही है जो वैलिडिटी हमारे सामने आते हैं वो है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। चार टाइप का वैलिडिटी हमारे सामने आता है। तो हम पहले चलते हैं फेस वैलिडिटी के पास। This picture you might have seen on the left side. Can you guess who is he? Yes, what you are guessing is right. That is, he is none other than Albert Einstein. E is equal to mc square. So very good. But do you think the picture is exact picture of Albert Einstein? No, because in the right side you can see the exact picture of Albert Einstein. But still you say by looking at the face, you say the figure is none other than Albert Einstein. So face validity is very similar. That means आप जो टेस्ट बना रहे हैं वो टेस्ट टेस्ट की तरह दिखना चाहिए।
कि जो एक्सपर्ट को आप दिए वो कुछ उसका मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यू पुट ना करके वो देख के बता सकता है आपका टेस्ट जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। जैसे कि टेस्ट है उसका मतलब क्वेश्चन नंबर, टाइम ड्यूरेशन, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रॉपर एंड वो दिखना चाहिए। टेस्ट जो बनाए आपने वो टेस्ट की तरह दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो उस टेस्ट का फेसिबिलिटी है। It's considered as a very means is subjective judgment. It is always based on subjective judgment, or you can say it's a intuition. That means मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट वैलिड होगा। कि हम एक एग्जांपल देते हैं। हाँ, आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, आपके पास एक सहयात्री है, आप उसको कुछ देर देखने के बाद आपको लगता है कि ये ऑनेस्ट है, क्योंकि उसका फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है आप ये ऑनेस्ट है। तो अपना बैग छोड़ के आप पानी बोतल लेने चले जाते हैं। तो जो दिखने में लगता है वो टेस्ट जो है आपका, वो टेस्ट दिखने में वैलिड लगना चाहिए। फेसिबिलिटी ये बता रहा है कि जो टेस्ट दैट शुड बी appear to be valid, then it is having face validity. Next validity is nothing but the content validity. कंटेंट वैलिडिटी एक एग्जांपल मैंने इधर रखा हूं कि कंटेंट वैलिडिटी क्या है। कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक मैथमेटिकल टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। से फॉर इंस्टांस that mathematics book or mathematics course having 4 units. One is percentage, one is ratio and proportion, one is algebra, one is arithmetic. आप मुझे ये बताइए, मैं एक टेस्ट प्रिपेयर किया और उस टेस्ट में हम परसेंटेज को डाला और अलजेब्रा को डाला और दे दिया बच्चों को। बच्चों ने क्या किए, उसको मतलब रेस्पॉन्ड किए। लेकिन आप लोग सोचिए, जो बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में थोड़ा कमजोर होगा या फिर एरिथमेटिक बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा, पहले 2 चैप्टर पढ़ाई होगा, तो उसका हालत क्या होगा। तो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो कहता है कि आप टेस्ट बनाइए जिसमें कि हर यूनिट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन आप दीजिए। कि अगर आप 40 मार्क का बनाते हैं टेस्ट, वो हर यूनिट से 10-10 मार्क का होना चाहिए। अगर नॉलेज लेवल का क्वेश्चन पहले यूनिट में 2 है, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2 होना चाहिए। Means content validity is validity which is talking about that your test must have a vector representation from all the units what you are going to be tested. So this is all about content validity. Then we are moving towards the construct validity. Construct is nothing but a concept, and concept is nothing but definitely having a, you can say it's an attribute or a skill or ability, and that should be based on some established theory. You can take the example of intelligence, attitude, anxiety. All that things are a concept or construct. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है कि मैं एक टेस्ट प्रिपेयर किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, मैं एक टेस्ट प्रिपेयर किया कि वो इंटेलिजेंस को मेजर करेगा, और एंड वो टेस्ट को मैंने बच्चों को दिया, उनका इंटेलिजेंस को मेजर किया। उसके बाद मैं देखा कि वो जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर रहा है, वो कुछ और मेजर कर रहा है। तो मैं जो टेस्ट बनाया था, मेरा इंटेंशन था कि वो इंटेलिजेंस जो कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर करेगा, लेकिन वो उसको मेजर ना करके वो मेंटल एबिलिटी मेजर किया। तो मेरा जो टेस्ट है उसका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। अगर मैंने एक टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस के लिए, वो टेस्ट इंटेलिजेंस ही मेजर किया, तो मैं मेरा टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है ये सब बोल सकता हूँ। तो construct validity is the validity in which if you have prepared a test to measure some construct, if your test is measuring that particular construct, then your test having construct validity, otherwise your test having
no constructability. Then next one is the types of constructability. Basically, there are two types of constructability. One is convergent validity, one is discriminant validity. एंड इन कन्वर्जेंटबिलिटी आप लोग जानते होंगे कि ऐसा दो मेजर कभी परफेक्टली कन्वर्जन नहीं हो सकते हैं. फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा. As a researcher, say for instance, I'm a researcher. I have to I have to test the depression of college students, and for that I have chosen two measurement method. One is I have chosen survey method. One is participant observation, and for that I have developed tools for both the methods, and I have collected the scores from both the methods. And after collecting the scores, if the two scores from survey and from participant observations are very close to each other, then I can say my test is perfectly converse, or both the tests are converse with each other. And this demonstrates that they are measuring the same construct. So if we are talking about convergent validity ऐसा मेजर करता है कि दो टेस्ट साइमल्टेनियसली सेम चीज को मेजर किया और उसको कोरिलेट करने के बाद पता चला कि both the tests are very close, very nearer to each other, then the test having convergent validity. Otherwise, no. Then coming to the discriminant validity. Discriminant validity is very simple. It is the type of validity in which you have to show that the measures that should not be related are in reality not related. ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है. हम दूसरे स्लाइड में एक एग्जांपल है उसमें अच्छे से समझ जाएंगे. तो एक कंस्ट्रक्ट है सेल्फ एस्टीम, उससे एसोसिएटेड कंस्ट्रक्ट जैसे सेल्फ वर्थ है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ अप्रेजल है, सोशल स्किल है, ऑल आर very related construct with self esteem, but they all the four construct are not equal with self esteem. So हमें क्या करना है कि हमें ये दिख रहा है कि सोशल स्किल सेल्फ एस्टीम से अलग है, लेकिन इन रियलिटी अलग है कि नहीं, इससे देखने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को चूज करेंगे. और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का फॉर्मूला क्या है, इधर रखा हूं, आर एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स एक्स into r y y, where r x x is the correlation between x and y. So for instance, you take self-esteem as x, self-worth as y, then r x y is equal to correlation between self-esteem और self-worth के बीच में क्या correlation है, and r x x is the reliability of x, r y y is the reliability of y. And here the important aspect is, if a result coming which is less than 0.85, which tells us that there is an existence of discriminant validity. If this is greater than 0.85, then the two constructs overlap greatly with each other. So that definitely having no discriminant validity. That means if self-worth or self-esteem में correlation 0.85 से ज्यादा आ गया तो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आप निकाल नहीं सकते हैं. तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के पास. प्रेडिक्टिव वैलिडिटी जैसे एज द नेम सजेस्ट, प्रेडिक्टिव मींस यू हैव टू प्रेडिक्ट. So for instance, there is a cloudy sky, you can predict that today or tomorrow there will be rain. That is prediction. Here also in predictive validity same thing happen. That means हम क्या करते हैं, कुछ एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जैसे कि हम इधर कुछ एग्जांपल दिए हैं. नीट जो मेडिकल के लिए होता है, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. जो एंट्रेंस है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें जो स्कोर आता है इसमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो बच्चा इसी में इतना स्कोर किया
वो जो कोर्स करेगा उसमें भी उतना स्कोर करेगा, इसीलिए हम मतलब वो एंट्रेंस टेस्ट करते हैं ना। तो प्रेडिक्टिबिलिटी ये बोलता है कि इफ ए स्टूडेंट is scoring 80% in entrance examination, and after the completion of course, if the student is getting 80% or near, very near to each other, 80, 79 or 81%, then the test which you have prepared during your entrance examination having predictive validity. Otherwise there is no predictive validity. Say for instance your entrance examination score is 80 and the students is getting 30%, not one students, maximum students getting 30%, then the entrance test having no predictive validity. So next is concurrent validity. Concurrent, as the name suggests, concurrent, wo two tests you have to compare. Say for instance, I have prepared one test for measuring the intelligence test. Say for instance, I have prepared a test which will measure the intelligence of students, and I have given the test to students to measure the intelligence of different students, and I got some scores of intelligence, IQ score. I got some IQ score. And after that, I have given the standardized test, say for instance, Binet test, Alfred Binet test. And I got some score, and I'll correlate Alfred Binet test, which is a standardized test, and what I have prepared, the intelligence test. If the scores are very nearly related or very much correlated with each other, then the test what I have prepared having concurrent validity, otherwise not. So what are the factors which affect the validity? So first one is any unfair mean while giving the test. If the student seeking help from his friends or seniors, then it will definitely affect the validity. In the inside the testing hall, if the student is just making some means unusual things, means cheating or something which is not means which affect the validity, then any if those test items are essay type test items, then you cannot predict the validity, and it also affect the validity. Then if there is a very adverse physical and psychological condition, very disturbing, or there is a loud noise, then it also affect the validity. Then if you have given the test having very insufficient time to complete the test, then it also affect the validity. And then the anxiety, if the students feel very anxious about the test and they have developed a fear, then definitely it will affect the validity. And most importantly, the physical and psychological condition of the subject, जिसको आप टेस्ट करेंगे उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन भी वैलिडिटी को अफेक्ट करता है. So if you have any query regarding this validity, please drop your question in the comment box. I'll try my best to answer the question. Thank you very much for joining me. In the next video, we'll discuss about the rest of the characteristics of a good test, that is usability and objectivity. So till then, take care, have a good day.